Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our channel Free Islamic Education Group. Maryam Saftur and team presents Memorizing Surah Al-Waqiyah. Lesson number 13, ayat number 25 and 26. Of course, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम अपना लास्ट लेसन रिवाइज करेंगे ताकि हमारा हिफ्ज़ स्ट्रॉन्ग हो सके. So, let's start it with the name of Allah. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन सुम्मा आमीन. आयत नंबर 23 एंड 24 को देखते हैं जो कि हमारा लास्ट लेसन था. कअम्सालिल लुलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून. आयत नंबर 25 देखते हैं. ला यस्माऊना फीहा, लाम ज़बर अलिफ ला है, दो हरकत लंबा करेंगे. या के ऊपर सिंगल हरकत है, फ़ौरन इसको सीन साकिन से मिलाएंगे और सीन की विसल को प्रोमिनेंट करेंगे. मीम के ऊपर सिंगल हरकत है, एक हरकत पढ़ेंगे. आइन पेश वाव ऊ है, दो हरकत खींच के पढ़ेंगे और हमज़ा की आवाज़ ना लगे इसलिए आइन की आवाज़ को वाज़ेह करेंगे. नून के ऊपर एक हरकत है, इसको एक हरकत पढ़ेंगे. फाज़ेर या फ़ी है, दो हरकत लंबा करेंगे. हा ज़बर अलिफ हा, दो हरकत लंबा करेंगे. लग़्वन वला तअसीमा, लाम के ऊपर है जी ज़बर, फ़ौरन इसको गैन साकिन के साथ मिलाएंगे. एक हरकत है लाम की इसलिए गैन साकिन के साथ मिला देंगे फ़ौरन. गैन हैवी लेटर है, इसको हम फुल ऑफ माउथ पढ़ेंगे. वाव के ऊपर है ज़बर तनवीन. नेक्स्ट वर्ड में जो हमारा हरकत वाला वर्ड है वाव है, वो तशदीद वाला है, मुशद्दद है. ठीक है, दोनों हरूफ को आपस में मिला के अदा करेंगे इस तरह से कि गुन्ना भी होगा. फिर वाव के ऊपर है जी एक हरकत, इसको हमने लंबा नहीं करना, सिर्फ एक हरकत पढ़ना है. लाम ज़बर अलिफ ला है, दो हरकत खींच के पढ़ेंगे. ता के ऊपर एक हरकत है, हमज़ा के ऊपर सुकून है, यहाँ पर झटका देंगे. सादेर या सी है, दो हरकत लंबा करेंगे. सा को सॉफ्टली प्रोड्यूस करेंगे. वक्त की सूरत में हम मीम ज़बर अलिफ मा प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, और हम इसको 2 से 6 हरकत लंबा लेके जा सकते हैं. ठीक है, एक दफ़ा देखते हैं आयत नंबर 25. ला यस्माऊना फीहा लग़वन वला तअसीमा. एक दफ़ा फिर देखते हैं. ला यस्माऊना फीहा लग़वन वला तअसीमा. आयत नंबर 26 पे आ जाते हैं जी. इल्ला क़ीलन सलामन सलामा. हमज़ा के नीचे ज़ेर है, लाम मुशद्दद है, दोनों को मिला देंगे. और लाम के ऊपर है दो हरकत पढ़ेंगे लाम को, क्योंकि लाम ज़बर अलिफ ला है. ठीक है जी, जहाँ भी तशदीद वाला वर्ड आता है वहाँ पर दो हरूफ होते हैं, एक साकिन और एक हरकत वाला. ठीक है, इसको ध्यान से इसकी अदायगी करेंगे. क़ाफ हैवी लेटर है, उसको हमने पुर पढ़ना है. क़ाफ ज़ेरिया क़ी है, इसको हमने दो हरकत लंबा करके पढ़ना है. लाम के ऊपर ज़बर तनवीन है और नेक्स्ट वर्ड हमारा सीन है. यहाँ पर रूल हो रहा है इख्फा. ठीक है, हम लोग लाम
تنوین میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے. سین کی فصل کو پرومیننٹ کرنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. ایک حرکت پڑھنا ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، 2 حرکت کھینچ کے پڑھنا ہے. میم کے اوپر ہے زبر تنوین کے بعد پھر اگین سین آ رہا ہے. سین کی وصل کو پرومیننٹ کرنا ہے اور یہاں پر پھر رول آف اخفا ہوگا. نون ساکن اور تنوین کا رول ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی سین آئے گا، ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پر نون ساکن یا جو تنوین میں نون ہے اس کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے. ٹھیک ہے. پھر لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم 2 حرکت لمبا کریں گے اور وقف کی صورت میں ہم میم زبر الف ما کر دیں گے اور 2 سے 6 حرکت کھینچ کر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. آیت نمبر 25 اور 26 کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ آپ کے اور میرے لیے ڈھیروں آسانیاں کرے اور ہمارے لیے علم کے راستوں میں ڈھیر ساری آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری تنگیاں، ہماری مشکلات دور فرمائے، ہمارے غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.